Hello everyone, welcome back to class, and in this video we have discussed the new topic, that is velocity filter from chapter moving charges and magnetisms. Right? Students, in previous video we have discussed the Lorentz force. Okay, and in this force we have discussed some cases related this force, right? And from which the one case was when the electric field and magnetic field and the velocity of charged particle are mutually perpendicular to each other like this. Okay, and when what was the case? In this case, the net force and the Lorentz force will be zero, right? And we have got a formula, that is V is equals to EV, right? What is V? V is a selector velocity. Here you can say velocity filter, right? And in this video we will discuss about this velocity filter. What is the velocity filter? Velocity filter like a radioactive source, okay, and they have got different velocities, right? But for our calculation we need to take certain charged particle which have a fixed value of velocity, right? So say that velocity, that is V naught, right? And what we want, that all charges which have velocity v1, v2, v0, v3, v4, we do not want. We want to filter them out, okay? And we want this v0 velocity, okay? So how can you make a filter for this? आप इसे कैसे फिल्टर कर पाएंगे कि आपको एक v0 वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाए, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी फिल्टर एक आपका सेटअप है, राइट? एक इसे आप एक आप एपरेचर बोल सकते हो, जिसमें आप कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स पास करवाएंगे और मोस्टली चार्ज पार्टिकल आपके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट एक पर्टिकुलर चार्ज को एक अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आप उसे इस तरीके से सेट करोगे कि वो विदाउट डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को पास करके आगे चले जाए, राइट? वी विल मेक अ डायग्राम लाइक इट्स अ नेगेटिव प्लेट, राइट? इट्स ए negative plate and it's a positive plate. We have take for the uniform electric field, or we have get a uniform electric field, right students? Okay, and one moving charge particles from the source of charges move in a velocity v, right? So when it comes a region of electric field, that is electric field, so a force exerted by electric field, right? And what is the direction of force? Is towards the electric field, that is Fe, that is Fe की जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, right? And the motion of charge particle is direction, that is x. Let if is the y axis, this is x axis, so charge particle का motion x axis में होगा, okay? Students, here we can observe that it's a projectile motion, right? In projectile motion, when we throw a ball horizontally with a velocity v, so it exerted a gravitational force from downwards, so ball makes parabolic motion, okay? So here same thing, that is इस वे में, इस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल, ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड है, ओके? तो ये इस तरीके से रेस्ट करेगा और इस तरीके से पैराबोलिक मोशन में मूव करेगा, राइट? एंड व्हेन वी ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
in the direction of outward, in the direction of outward direction. Okay, outward direction. This is the magnetic field outward, right? And motion of charge particle in that direction. Right? So according to right hand palm rule, using the right hand palm rule, what is the direction of force? Magnetic force. Yes. Indicate the align the right hand finger in the direction of magnetic field, and the thumb should be direction of motion of charge. Okay. Then the palm will be show the direction of force. So force will be exerted downwards. Okay, F magnetic force, FB, right? So here we can say that the both forces are in equal but in opposite direction, right? So what is the motion of charge particle in a region of electric field when it exerts a magnetic force? Yes, we all are know when a charge particle move in a region of magnetic field, then the motion of charge particle will be circular. It means ये इसकी डायरेक्शन होगी. It will become a parabolic inward and it will become a parabolic motion outward, right? So is when the both forces are equal and opposite direction, तो जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस तरीके से, राइट? और जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए हियर एंड दियर, एंड द वेलोसिटी व्हेन जब आपका दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका जो फोर्स होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा लाइक दिस. ओके, तो यही आपका क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, राइट? हियर द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द हियर मैग्नेटिक फोर्स. सो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. ओके, एंड वी नो दैट द थीटा इज 90 because all these are three are mutually perpendicular, तो थीटा 90, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो अब वी इज इक्वल टू ई बी, राइट? दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर. ओके, राइट? सो दिस इज द explanation of velocity filter. Okay, and same thing I have explained in notes. Velocity filter, it is a device which is used to select the charge particle of particular velocity from a beam of charge particle. मीन्स जो आप velocity filter एक ऐसा डिवाइस है, एक सेटअप बोल सकते हैं जो एक आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है, राइट? प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन लॉरेंस फोर्स. इसका ये जो आपका इसका प्रिंसिपल एक लॉरेंस फोर्स पर डिपेंड करता है. इस एंड शोन एंड फिगर जो आपको हम फिगर में आपको शो दिया हुआ है हमने, ठीक है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू ev, राइट? जब आपका फोर्स जीरो होएगा उस टाइम पर आपके पास एक वेलोसिटी ऐसी आएगी v इज इक्वल टू ev जो आपको एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखेगी. ओके, सो दैट चार्ज विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड रेस्ट आर डेविएटेड हियर एंड देयर, दस वी गेट चार्ज पार्टिकल ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी. इसीलिए आपको क्या मिलेगी, एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको मिल जाएगी. ओके, ओके. और मेन थिंग स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिक और इसमें इन जो v की वेलोसिटी आप सेटअप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग. ओके, मीन्स अगर आपको वेलोसिटी, अगर आप मान लीजिए आपको 3 वेलोसिटी का एक चार्ज पार्टिकल पास करवाना है हियर यहां से, है ना, तो आप इन दोनों की वैल्यू को इस तरीके से सेट करेंगे
कि आपका ये जो वेलोसिटी है ये आपको एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिल जाए, और यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी पार्टिकल आप चाहते हैं कि सीधे मूव हो जाए वो आपको रिक्वायर हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स ये आप सेट कर सकते हैं कि इस इंटेंसिटी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेट करनी है, जिससे हम यहाँ से चार्ज को मूव कराएंगे और ये स्ट्रेट होके विदाउट डिफ्लेक्शन बाहर निकल आएगा, राइट। और जो रेस्ट और जो वेलोसिटी जो ये वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है, वी नॉट की वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा, और जो वी नॉट जो इस वेलोसिटी से ज्यादा के जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो इधर पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होंगे, और जो इससे कम होंगे वेलोसिटी के वो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट होंगे। ओके, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दियर, और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, चार्ज का डिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन इस साइड होगा, राइट। और जब वेलोसिटी कम हो जाएगी इसकी, तो आपका देख रहे हो वेलोसिटी इसी पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम हो जाएगा, राइट। तो आपका जो पैराबोला मोशन होगा ये अपर साइड में होगा, राइट। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ओके।